Hello students, welcome to physics class. Today we'll start with lecture 8 of chapter 2, and in this lecture we study about the capacitance of parallel plate capacitor with dielectric slab in between the plates. So let us recall the capacitance of a capacitor, parallel plate capacitor, having plate area A and plate separation small d with vacuum between the plates, and we had derived in our previous lecture that capacitance of such capacitor is given as C is equal to epsilon naught A by D, where the charge on plates plus minus Q, electric field between the plates E node is given as sigma by epsilon, or which can be written as Q by A epsilon. This we had studied in our previous lecture. Here we had represented the capacitance of a parallel plate capacitor having vacuum or air between the two plates of it. Now in today's lecture, what we are going to study that what happens to the capacitance of the capacitor if in between the plates a dielectric slab is inserted. See here, we are having a parallel plate capacitor having separation between them is small d, and in between these two plates a dielectric slab of thickness small t is inserted, and it is shown clearly that t is less than d. जब हम किसी भी कैपेसिटर की प्लेट्स में अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे, देन व्हाट इम्पैक्ट ऑफ इट विल बी ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. इसके डालने से क्या होगा, क्या कैपेसिटेंस बढ़ेगी, घटेगी या सेम रहेगी? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट. इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस. सो कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने से पहले हम देखते हैं which physical process will take place when dielectric slab is introduced between the plates of capacitor. See here, since the capacitor is charged, its left side or left plate is positively charged and right plate is negatively charged, and the electric field because of these charges is E node. E node is the original electric field between the plates of capacitor without dielectric. Now what happens when dielectric is introduced? I had shown you video in previous lecture that whenever dielectric slab is introduced, the polarization of dielectric slab will take place, and because of this polarization of dielectric, the left face of the dielectric, the left surface of dielectric will acquire negative charge and right will acquire positive charge, and we can say that charges are induced on the surface of dielectric. और बिकॉज ऑफ दीज चार्जेस, इन चार्जेस के इंड्यूस होने की वजह से, ये चार्जेस क्यों इंड्यूस हो रहे हैं? क्योंकि जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है वो क्या हो गया, पोलराइज हो गया. एंड बिकॉज ऑफ दीज चार्जेस वी से दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड इनसाइड द dielectric slab, and this induced electric field is denoted as EP. E नोड आप समझ रहे हैं, E नोड क्या है? ओरिजिनल फील्ड, जो फील्ड कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में था जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था. अब जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे, देन व्हाट डू वी ऑब्जर्व दैट इनसाइड द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वन अनदर फील्ड गेट्स इंड्यूस्ड. एक तो उसमें पहले ही है, ई नोड तो पहले ही है. ई नोड किसके कारण है? कैपेसिटर के कारण है. लेकिन इस फील्ड के कारण ये स्लैब पोलराइज हो गई, और इसके पोलराइज होने से इसकी दोनों सरफेसेस पर चार्ज अपीयर हुए, एंड ड्यू टू दिस चार्ज the electric field is induced, and this induced electric field is represented by EP. Why P is written? Because it is because of the polarization of dielectric slab. तो हम कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर दो फील्ड है हमारे. कौन कौन से? E नोड एंड EP, एंड दी बोथ फील्ड्स आर acting in opposite direction, and in case of dielectric EP is found to be less than E node. EP का मैग्नीट्यूड कम है, E node का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है. तो अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट लें, the resultant field in between the plates of dielectric slab is E. What is E? E is the net electric field inside the dielectric, and this field E is given as E node minus EP. E node is the field original field,
and EP is the induced field, and E is equal to E node minus EP can also be written as E node by K in terms of dielectric constant of the material. What we can say that the new field, how it is related with initial field has been reduced. कितना reduce हो गया ये? It is reduced by the factor K. So E is equal to E node by K. ये relation हम ध्यान रखेंगे and we'll find out the capacitance of capacitor. Since capacitance of general formula we know C is equal to Q by V, and Q we know charge on the plates of capacitor. So we have to find out the value of V. अगर हम V find out करते हैं, V find out अगर हम कर लेते हैं, then by putting the value of V in this equation 2 we can find out the capacitance of parallel plate capacitor. So let us talk about V. Since V is given as the dimension of V is E into D. V क्या होते हैं? E into D. V is equal to E into D. So see here, if we apply E into D, electric field into distance, तो अगर हम यहाँ देखें क्या टोटल डिस्टेंस D में सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है? नहीं. इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन दी स्लैब इज E. कितने डिस्टेंस में? T डिस्टेंस में. लेकिन अगर हम D माइनस T डिस्टेंस की बात करें तो फील्ड हमारे पास कितना है? फील्ड इज E नोड. सो when we put the value of V or when we derive the value of V, it consists of two term. क्यों टू टर्म्स आ रहे हैं इसमें? क्योंकि दोनों थिकनेस में, T थिकनेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग है और D माइनस T में अलग है. T थिकनेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E है और D माइनस T में क्या है? E नोड. सो V हैज टू टर्म्स E नोड D माइनस T प्लस E इंटू T. सो E node D minus T plus we'll put the value of E in terms of E node. It is written as E node by K into T. So V is equal to E node common D minus T plus T by K. So students, we had evaluated the value of V. We'll put this value and we'll evaluate the value of capacitance. Capacitance क्या होता है हमारा? Q by V. We'll put the value of V here. V is given as Q by epsilon A D minus T plus T by K, and on solving it we'll get epsilon A by D minus T plus T by K. So this is the desired result जो हम prove करना चाह रहे थे, that in the presence of dielectric how the capacitance will be changed. If we compare it with the previous one means when vacuum is present in the plates of capacitor, तो expression हम क्या लेते हैं? क्या derive किया था हमने? C node is equal to epsilon A by D. And if we compare both these equation, what do you observe? That denominator of C is less than C node. So value of C is more than C node. Clearly we can see that capacitance increases when dielectric slab is introduced between the plates of capacitor. So what impact will take place कि जब भी हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करेंगे कैपेसिटेंस क्या होगा? कैपेसिटर का इंक्रीज हो जाएगा. दिस इज द मेथड टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर. स्पेशल केस क्या होगा? इफ T इज इक्वल टू D. व्हाट डू वी मीन बाय T इज इक्वल टू D? दैट इफ होल स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब. अभी तो हमने क्या लिया था? स्लैब हमने कम थिकनेस का लिया और प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है वो ज़्यादा है. अगर हम दोनों इक्वल करते हैं T इज इक्वल टू D, देन इन दिस एक्सप्रेशन जो हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया है, इन दिस एक्सप्रेशन विल पुट T इज इक्वल टू D, एंड इफ यू पुट T इज इक्वल टू D एंड सॉल्व इट, विल गेट द आंसर C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन A बाई D. Clearly it can be written as C is equal to K into C node, means capacitance of the capacitor again it has been increased, but how in this case? In this case it has been increased by K times. So capacitance increases in between the plates of capacitor when dielectric slab is introduced. Now let us study what happens if instead of dielectric slab a conducting slab is inserted between the plates of capacitor. In that case again polarization of slab will take place. In the same way induced charges will be there, induced field will be there. Now what is the difference in this and in the previous case? In this case induced field, the magnitude of induced field is same as the original field E node. यहाँ EP और E node दोनों का वैल्यू सेम होगा, दोनों की डायरेक्शन तो अपोजिट है इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है. सो नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब विल बी इक्वल टू 0. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0.
तो अब इस केस में हम कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? अगेन C इज इक्वल टू Q बाई V, एंड इन दिस केस V हैज ओनली वन टर्म, दैट इज E नोड इंटू D माइनस टी. दूसरा टर्म क्यों नहीं आया इसमें? क्योंकि T सेपरेशन में, T थिकनेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0. So when we put the value of E node in terms of Q as we had done in previous topic, then it will give us epsilon A by D minus T. So capacitance will be epsilon A by D minus T, and if we compare it with the original value, original means capacitance when vacuum is there in between the plates, again capacitance increases by inserting conducting slab. So let us do some numerical on the topic covered in this content. First one is a slab of material of dielectric constant K has same area as plates of parallel plate capacitor, but thickness is 3D by 4. How is the capacitance changed when slab is inserted between the plates of capacitor? So see here what is given, T is equal to 3D by 4, and we had to compare it with the original capacitance. Original capacitance means initial capacitance. C is equal to, we know the formula for change capacitance as C is equal to epsilon A by D minus T plus T by K. Now students, what is given? That T is equal to 3D by 4. So we'll put the value of D as 3D by 4. लेकिन उससे पहले हम इसे क्या करते हैं? We change this expression in such a way that we get the result in terms of C node. तो हमने इसलिए डिनोमिनेटर से D कॉमन लिया, 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई डी के. ऐसा करने से क्या होगा? वील गेट द टर्म्स एप्सिलॉन ए बाई डी, और एप्सिलॉन ए बाई डी क्या देता है हमें? C नोड. इट मीन्स वी हैड रिप्रेजेंटेड द वैल्यू ऑफ C इन टर्म्स ऑफ C नोड. हमने पहले इसे कन्वर्ट कर लिया ताकि हम आंसर जो है बता पाए हाउ बाय हाउ मच अमाउंट द कैपेसिटेंस विल बी चेंज्ड. हम कंपेयर कर पाए C और C नोड को, इसलिए हमने ऐसा किया. सो we'll put the value of T is equal to 3D by 4 here, and on putting the value and solving it, what we'll get the C is equal to 4K by K plus 3 into C naught. One more numerical. Find ratio of capacitance of capacitor filled with two dielectrics of same dimensions but of dielectric constant K1 and K2. And B part, a capacitor is filled with two dielectric of same dimension, K1 is equal to 2 and K2 is equal to 3. Find ratio of capacitors in two possible arrangement. Students, what is given? We are having a capacitor, and in between the plates of capacitor, instead of one, two dielectrics are introduced or two are inserted, but in डिफरेंट मैनर. अगर आप यहाँ देखें ए में तो अलग तरीके से इंसर्ट किया है, और बी में देखेंगे तो अलग मेथड से इंसर्ट किया है. सो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ ईच कैपेसिटर, and then we have to compare the capacity of these capacitor, and in last we have to compare if K1 is equal to 2 and K2 is equal to 3, means we have to put the numerical values. So the problem is to find out the capacity of first capacitor and then capacity of second capacitor. See here students, in